हेलो प्यारे बच्चों, आज सोल्यूशन लाए हैं ISI B.Stat 2023 का पेपर का। इस पेपर में सब्जेक्टिव के ऊपर अगर कहेंगे तो इट वाज अ गुड वन, लेकिन काफ़ी कुछ ऐसा पैटर्न, काफ़ी कुछ ऐसा चीज़ें देखने के लिए मिला जो इस बार पिछले साल से थोड़ा लगता। ये थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन था, नंबर थ्योरी के ऊपर थोड़ा लंबा चौड़ा जाएगा, तो कोशिश करते हैं इसके ऊपर। तो डिटरमाइन ऑल इंटीजर्स, सारे इंटीजर को निकालना है, दैट एवरी पावर ऑफ n हैज ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स। पावर में क्या है? ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स रहे। ठीक है, सो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ n इक्वल टू 10 टू द पावर 2k है for all k greater than equal to 1. Now we note that the number of digits of an integer n greater than 1 is exactly number of digits अगर हुआ तो exactly होगा 1 plus log n base 10, ये number of digits. Indeed, if k equal to, अगर मान लीजिए 1 plus log n base 10 हो गया, then 10 to the power k minus 1 less than equal to n less than equal to 10 to the power k. अब n has exactly k digits है मान लीजिए. Now if n equal to 10 to the power 2k हो गया, so for m greater than equal to 1, then the number of digits is n to the power m is odd. तो वहाँ क्या होगा? 1 plus log n to the power m equal to इसका फंक्शन ले लेंगे 1 plus only 1 plus 2k. So now if we assume that all powers of n have odd power of digits, okay, so n is not in the form of 10 to the power 2k, so n is the power of 10 and n is a odd power of 10, so n to the power 1 तो n है, has an even number of digits, even digits, and this is impossible. तो ये तो impossible हो गया क्योंकि इस लॉजिक से हम लोग आगे नहीं जा सकते. So n equal to, n is not a power of 10 and log 10 जो n base 10 जो है is not a integer. So let us write log n base 10 equal to l plus r. l is greater than equal to 0 और इंटीजर r है अपना 0 से 1 के बीच में. ठीक है, so since n to the power 1 equal to n and has odd number of digits, so we deduce that 1 log n base 10, ये हो गया 1 plus l is an odd number, in particular l हो गया अपना even. So if r equal to 1 by m for some integer m greater than equal to 2, then 1 plus log n to the power m base 10 is equal to 1 m into 1 plus r, so 1 plus ml plus 1 ml plus 2. ये एक इवन हो गया, एस एल इवन है तो ml भी तो इवन हो गया, इवन इंटू ऑड, m के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं. So if r not equal to 1 by m, if we take here and m greater than equal to 2 and r belongs to 1 by m plus 1 to 1 by m in this range for some integers m greater than equal to 1. So but then n to the power m plus 1 has even number of digits. So 1 plus, so 1 plus log n to the power m plus 1, this is 1 plus m plus 1 into l, m plus 1 into r, l plus 1, so m plus 1 into l plus 2 हो गया.
So the latter relationship shows that the fact that m plus 1 into r belongs to 1 plus m plus 1 by m belongs to 1 comma 2. That's it. So this is the final solution, and this is the all the integers which happens to be like this.